So audio video clear? Hello everyone. Hello everyone. Sorry ଟିକେ late ହେଇଗଲା ନା କି? खोले नहले हब। चलो। Good evening everyone. Audio video clear तो? Audio change खोले। तो आज क्लास रही EVS and ecology. All are ready? Good evening everyone. First time गोटे एमिदी टाइम रे आपण मानकर क्लास अछि आई थिंक राइट थैंक यू एवरीवन रेडी नो चिल ओके 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 वेरी गुड चलो जल्दी जल्दी टे जॉइंट वाले कनेक्ट हुआ क्लास स्टार्ट करिबा मैम प्लीज 2 लाइन्स कौन 2 लाइन्स कौन कहबी कौन है अमित अरे मो आखि ठीक अच्छे कंप्यूटर बहुत टाइम यूज होची बोली दिस फॉर दैट ओके क्लास स्टार्ट करिबा पिला सब कुआडे गले आज क्लास अछि बोली से जानि नांदी ना कोन पिला सब कले कुआडे अछि अमित एबे मूड नाही गीत फित प्रणाम एवरीवन स्टार्ट करिबा पिला धीरे धीरे कनेक्ट होउचंदी तो फोन तो ओके सो बेसिकली आपण मानकर आज टू स्टार्ट होउची मोर ईवीएस तो अल्टरनेटिवली शताब्दी मैम प्रतिभा मैम आ मोर आपण मानकर जीएस पार्ट हमें कंप्लीट करिवु जेमिति कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपणकर शताब्दी मैम नेबे अल्टरनेटिव डे रे ओके सपोज वीक रे दीटा क्लास रहिला तांकर तो गोटे दिन से फिजिक्स नेबे गोटे दिन केमिस्ट्री नेबे तो सेम वे रे चलिबो मोर भी लाइक इकोलॉजी एंड ईवीएस मो गोटे ही टॉपिक आपण मानकर एनवायरमेंटल साइंस नउची आपनकर प्रतिभा मैम बटनी एंड जूलॉजी कवर अप करिवे अल्टरनेटिवली गोटे दिन बटनी नेबे आ गोटे दिन जूलॉजी नेबे तो जीएस पोर्शन टा आपनकर सब दिन संध्या 5 टा रे जेंति रुहे त आमे तीन जण ही आपनकर कंप्लीट कर हैला वेरी गुड इवनिंग एवरीवन सो बाकी आपण माने बैच विषय ऑलरेडी जानि चंती दिस इज फॉर द पीईओ आरआई एआरआई एंड अमिन बैच ओके जोटा कि प्राइस अछि 999 ओनली आपण माने इजीली जॉइन करि परिबे एंड दिस इज द फंडामेंटल बैच स्टार्टिंग रो आपण माने बेस स्ट्रांग करिकि आ पाखरे काफी टाइम अछि सो एबेठु जदि आपण माने कनेक्ट हेले आमे जल्दी क्लास स्टार्ट करिवु सो आपण मानक पई ही बेनिफिशियल हबो राइट राम 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 तो महापैक अगेन इंपोर्टेंट ऑलरेडी मु आपन कहि देली आरआईपीओ बैच महापैक रे आपण मानकर 1 ईयर जाय एवरीथिंग जहां भी एग्जामिनेशन आसीबो जो थरे के माने बैच स्टार्ट करिवु आपण मानकर ता अंडर रे सब रहि जिवो तो 3499 टाको देखिले आपण मानक लागुथो कि मैम थाउ 1000 टका टा नै जिवो बट आपण माने एठी मिस्टेक करूचंदी चूज करिवारे बिकॉज आपण माने जदि एटा नेले 1 ईयर पई नेले सपोज ता भीतर अलगा किछि वैकेंसी आसिला ता पई बैच लॉन्च हैला ताहले काउंट करी करी जदि आपण जिबे ताहले केते टंका हबो कोंतु तो एटा गोटे लिमिटेड प्राइस अछि जोडा कि 1 ईयर जाय जिते भी एग्जाम आसिला ता अंडर रे इवन जदि आगो को एसओ आसिला सीजीएल आसिला सब ता अंडर रे पळेबो ओके तो सीजीएल बैच ता
ऑब्वियसली या अंडर जदि महापैक नौचंदी सीजीएल एंड आपनकर आरआईआरआई ता अंडर ही आसी ओके वेरी गुड तो टाइमिंग आपण मानकु जणा अछि अगेन आई एम शेयरिंग द टाइमिंग्स ऑफ ऑल द एजुकेटर्स विथ यू कोन अछि देखो तो 7 स्टार्टिंग हो आपण माने एज यूजुअल जानि चंदी करेंट अफेयर्स आपण मानकर केडीएस सर नौचंदी 10 टारे आपनकर ओडिया एंड जीके जोटा कि इंडियन जीके एंड हमर अल्टरनेटिव कोन होची स्टैटिक्स जीके हमर अल्टरनेटिव हेकी रहउची ओडिया एंड जीके बाय चंदन सर देन 12 रे रहउची मैथ एंड रीजनिंग अल्टरनेटिंग हेकी जोगेश सर गोटे दिन मैथ देन नेक्स्ट डे पुनी रीजनिंग द टाइम इज फिक्स्ड फॉर हिम ओके सो अगेन 4 pm रे जीके बाय केडीएस सर एंड 5 pm रे जेमति कि आपण मानु कहली ए जो टाइम रे आपण मान नउचंती आज हमर ओरिएंटेशन थिला बोली टाइमिंग टा टिके चेंज करा जायतिला 5:30 को मोर रीशेड्यूल हेतिला बट सब दिन आपण मानकर 5 टा रे ही क्लास रहिबो ओके तो शताब्दी मैम सुदीप्ता मैम एंड प्रतिभा मैम आपण मानकर क्लास नेबे बाकी तापरे 7 pm रे कंप्यूटर सर ऑलरेडी जानचंती कंप्यूटर क्लास के नेबे बिकी सर नेबे एंड 8 रे आपण मानकर यूजुअल दिस इज 4 वर्ष है से टाइम ही फिक्स्ड सर को पई so this is Pinku sir and again a good night with Sudipta ma'am okay good evening Harshita very good evening ना ना एटा वाईटी रे ऐप विषय रे बे केमती कहूची ऐप रो क्लास स्टार्ट हेनी ना एबे तो माने जॉइनिंग करो देन विल स्टार्ट द क्लास तो एटा वाईटी रो क्लास गाइस ओके चलो स्टार्ट करिबा एबे the first question in front of you tell me what will be the right answer the initial source of energy for almost all the food chains is ecology vs आपण मान को टिके स्टार्टिंग रु बेसिक कहि देई थांती बट एनी हाउ नेक्स्ट क्लास रे आपण मान को टिके बेसिक कहिबी तापर स्टार्ट करिया हला एनवायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी को बैलेंस करके पढुछ तो ता ऊपर इजी क्वेश्चन आपण मान को वर्ड को नेकी जदी देखिबे ना टिके डिफिकल्ट लागिबा बट जदी क्वेश्चन को देखिबे दिस इज वेरी इजी ओके वेरी गुड तो कौन हबो मते को soil sun plants and water what will be the right answer what will be the right answer yes कौन हबो ना sun हबो काहेकि sun हबो obviously हमने जानि छे the ultimate source of energy of life what the ultimate source of energy for life is what ना sun because plant ठू आरंभ करी एनिमल जाए समस्त हमें कौन ना सनलाइट ऊपर ही डिपेंडेंट अछंती सनलाइट ऊपर डिपेंडेंट अछंती विटामिन D3 कन्वर्ट होउची कोथिरु हमर कोलेस्ट्रॉल भी डिक्रीज होउची ड्यू टू द विटामिन D3 ए सब जिंस इंटरलिंक्ड हेकी अछि हमर कोन ना सनलाइट सहित ओके सो हमें कहि परिबा यस फोटोसिंथेसिस प्लांट ठू आरंभ करी एनिमल रो लाइक बॉडी रो भी जे कोनोसी हमर कोन डिजीज क्योर होउची हमें कोनते ना सकाळे उठी की जो फास्ट सनलाइट आसुची ताको एटलीस्ट 15 मिनिट कोन स्किन रे बाजिबा दरकार कोथि पई ना विटामिन D3 हम स्किन रे एब्जॉर्ब हेबा दरकार दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कोन विटामिन so converting the chemical energy कोन that flows through the all the food chains is dependent over कोन ना sunlight so the main source of life is what ना sunlight हमें कहि पारि क्लियर प्लांट्स ऑलरेडी आपण माने जानचंदी फोटोसिंथेसिस सहित रिलेट करिवे इवन वाटर को भी आपण माने कोन प्लांट सहित प्रोड्यूसर जेतो हमें इकोलॉजी पढुचे त आपण माने easily relate करि परिबे they act as the producer capturing sunlight act as what the producers capturing sunlight okay the producers capturing sunlight is that okay कौन अछि प्रॉब्लम त मानकर बट मैम आर्टिफिशियल सनलाइट थ्रू बी विटामिन डी हेई पारुची यस हेई पारिबो बिकॉज आमर जो न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन रहउची तो सन रा कोरोना भीतर हम जोटा होची कोन होची ना मैम फिशन रिएक्शन होची एंड ताकू कन्वर्ट करूचंदी कि एबे चाइना रे जो टोकामैक हेइतिला मने अछि चाइना रे टोकामैक हेइছে एंड बहुत जल्दी हमर कोन सबटु बड़ आईटीआर जोतरे कि इंडिया भी पार्टिसिपेट करिछि न्यू लाइक अ सन ता भीतर जेति कि ऊर्जा अछि सेम अमाउंट रा हमर कोन ना एनर्जी रिलीज करेबारे प्लानिंग चलिछि जेमिति कि चाइना रे टोकामैक थी हेइछि सेम थिंग हमर हबो जोटा कि सेम जिंस ही बाहरिबो से फ्यूजन फिशन रिएक्शन ही हबो सेई थ्रू हमें कोन द प्रोटीन यूज करके हमें कोन सनलाइट को एब्जॉर्ब करबा दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ओके ताको भी हमें धीरे धीरे कवर अप करिया हम आपनकर कवर अप करबी सेटा साइंस एंड टेक रिलेटेड पळे आसीबो हैला so this is the soil sun plants and food now water
एंड आपण माने जानि चंती हमें रिलेट कहा को करूचे कहा को ना मैम सन को करूचे क्लियर नेक्स्ट जीवा वेरी गुड वाटर सहित आपण माने डायरेक्टली कहा को ना फोटोसिंथेसिस को भी रिलेट करि पारिबे सो इजी photosynthesis. The next question for you guys. Tell me, what will be the next question? Which of the following represents the grazing food chain? What? Now grazing food chain. कौन अच्छी option देखो ठीक है? The options are dead leaf, fungi, earthworm, grass, rabbit, fox, or the algae, dead fish, bacteria, or that is the fallen fruit and the lizards. Deepak कौन हिला तुम्हारा? I am joined paid because of you. Kind of continue. Thank you Deepak. Okay. So dead leaves कोटा हम right answer मते को relate करी के हमें मैंने पढ़ीबा. So right answer कहा को choose करियो मते को? What will be the right answer? Yes, obviously the B will be the grass, then rabbit आसुची, then हमर कोन fox आसुची. केमिति प्रोसीजर हमें जानू छे because हमें जेमति जानिबा कोन ना grass को हमें कोन नउ छे as a producer grass को हमें कोथरे नउ छे ना हमर producer भाबरे नउ छे. Okay, so rabbit को कोथरे नउ छे ना herbivores नउ छे. तो grass की नउ छे खाउची rabbit grass को खाउची ताहले हमें ताको secondary सेक्शन ने नहीं परिबा. यस मैम एंड ये को कैटेगरी रे हर्बिवोर रे जीवा ना कैनिवोर्स रे मैम हर्बिवोर्स रे जीवा. सो हमें ताको सेकेंडरी हर्बिवोर्स कहि परिबा कि यस मैम कहि परिबा. अगेन फॉक्स आसिला जे कि कहा को खाउची ना रैबिट को खाउची ताको हमें कोन कहि परिबा हर्बिवोर्स ना कैनिवोर्स ना मैम ताको हमें कैनिवोर्स कहउचे बट कोन कहिबा ना थर्ड दैट मींस टर्शियरी कैनिवोर्स ताको हमें कहिबा. Just a minute, huh? Okay. Food chain but not under the grazing food chain. Yes. So आमे algae, dead fish and bacteria एमान को different कोन ताको आमे इजीली एलिमिनेट करि परिबा. Fallen fruit हैला ants हैला lizards हैला एमान को भी आमे डिफरेंशिएट करि परिबा as it is the starts with the fallen. Okay, start होची कोथरु fallen fruit रो. So initially किछि लाइक कोन टाइप जेंति grass from start हैला fallen fruits ants तापरे lizards पळे आसिला. तो एटा fallen रो जेहेतु होची ताको आमे कंसीडर करूनी. ओके कारण डिकम्पोजिंग फ्रूट आसी जाउची ना फॉलन हे गला माने. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू व्हिच इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ए फूड वेव. सो फूड चेन विषय जानिलो केमिति हमें कहउची ना कहा को सपोज हमें काटू घास टू आरंभ करूचे घास को किए खाउची ना मैम झिंटिका खाउची देन झिंटिका को किए खाउची ना मैम सपोज साप खाइला देन साप को किए खाउची ए सब तापर धीरे धीरे हे के हमर कोन लेवल ऑफ रे हमें मैच करूचे ताको हमें पैच पके जाउचे. तो एबे कोन अछि ना सेटा फूड चेन बट फूड वेव एंड फूड चेन आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो फूड वेव को हमें केमति कंसीडर करूचे द क्वेश्चन मते को राइट आंसर कोटा हबो व्हिच इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फूड वेव. फूड वेव अकॉर्डिंग हमें कहा को कहि परिबा. अच्छा हां फूड वेव मस्त लागे पिला सब आज कोड़े जाइछंदी क्लास को लाइक शेयर करिया हाथ काटुची. अच्छा पिला 48 लाइक कोन पे 9टा अछि क्लास को जल्दी लाइक करो क्लास जल्दी लाइक करो. हाँ रोहित यूजुअली यू आर माय न्यू स्टूडेंट एज यूजुअल. चलो तो व्हाट विल बी द राइट आंसर. What will be the देखो फर्स्ट कोन अछि ना इट शोज ओनली वन पाथ ऑफ एनर्जी फ्लोज. सो आमे कहिलो फूड वेव रे कोन ओनली गोटे पाथ शो करेगी नो मैम दिस इज आमे कोन कहि परिबा नो. सो फूड चेन कोन होची ना एटा को जदी आपण माने कंसीडर करिवे फूड वेव बदल रे एटा डेफिनेशन कहा को शो करिबा ना मैम ये तो फूड चेन को शो करूची कहा को ना फूड चेन को नॉट फूड वेव को. ओके जोटा कि गोटे पाथ रो एनर्जी को शो करूची. नेक्स्ट सेंटेंस कोन अछि इट इज लेस स्टेबल दैन ए फूड चेन थारु से कोन लेस स्टेबल ये तो निजे ही फूड चेन रो सेंटेंस कहूची. ओके सो फर्स्ट हमरा फूड चेन ही कहिला देन फूड वेव सॉरी फूड चेन टू कोन ये लेस स्टेबल की it is less stable. It is means कौन कहूँ हमरा food wave is less stable than the food chain. Is that so? No ma'am एटा भी नुह आमे कौन कहि परिबा this is
नो as food waves provide the alternative pathways काकू food wave हमर गोटे alternative pathways provide करूची for the energy releasing तो एनर्जी जिते भी हमारा रिलीज होची सेटा फूड वेव ताको कंडक्ट करूची तो हमें कहि परिबा कि मेकिंग देम मोर रेजिलिएंट एंड मोर स्टेबल कोन देन द चेन सो ये मोर स्टेबल हे जाउची मोर रेजिलिएंट हे जाउची फूड वेव थारु सो नो ये हबनी एलिमिनेट देन कोन ऑप्शन आसुची देखो कोन अछि नाइट शोज इंटरकनेक्शंस अमंग फूड चेन्स इज दैट सो ये कोन इंटरकनेक्शन शो करूची कि अमंग द फूड चेन्स हां जी ये होगा ये सही आंसर होगा क्या बोलिए फिर यस ये ही राइट आंसर होगा सो इट शोज द इंटरकनेक्शंस अमंग द फूड चेन्स यस मैम द फूड वेव्स link multiple food chains like giving a complete picture of the energy transfer in the ecosystem in our ecosystem को हमें consider करछे सेतरे multiple of food chains आसीबो multiple of food waves आसीबो so हमें कहि परिबा कि yes these are the interlinked okay so this will be the right answer and this answer is satisfying the question's demand next कौन अछि देखो it excludes the decomposers no ये exclude करून decomposers are always the present in the food wave चलो next in a grassland ecosystem the tough carnivore is usually grassland ecosystem को पढ़े आसो in the grassland ecosystem in yes को in a grassland ecosystem the tough carnivore is usually what just a minute guys okay so यार क्वेश्चन आंसर मते दियो फर्स्ट कौन होची in a grassland ecosystem the tough carnivore is usually what will be the right answer C herbivore omnivore tertiary consumer or producer what is the right answer herbivore haba ki no ma'am herbivore को तमे primary consumer रे consider करू छ herbivore is what this is nothing but the primary consumer okay then omnivores को हमें consider करू छ कि omnivores को हमें consider करू छ कि no ma'am because they eat both the plants and animals but do not necessarily हमें कहि परिबा that occupy the trophic level जदि trophic level हमें देखिबा ना एमिति necessary नाही कि occupy करिवो तो omnivores दाको both को हमें कहि दियंतु both the plant and animal P and A लिखि छ that is for the plant and animals okay tertiary consumer को हमें नहीं परिबा कि मते कोंतु tertiary consumer को हमें नहीं परिबा कि is that so yes ma'am no Nandita why no tertiary consumer को नहीं परिबा because these are what now the apex predators what and these are the apex predators like the lion cella and different types of wolf cella suppose एमान को हम नहीं परिबा in the grassland so grassland को तले हमें consider करूचे तो starting रो आपण ending जाय जानतु घासरू आरंभ करिकि पूरा हरिण को किए खाउची ना बाघ खाउची सो एई टाइप रो जदि आपण जिवे ग्रासलैंड पर्यंत ताले ग्रासलैंड रो स्टार्टिंग हेई कि टर्शियरी कंज्यूमर पर्यंत ही एंड हबो clear tertiary consumer पर्यंत ही एंड हबो okay so they control the population balance and have no natural enemies clear चलो next which of the following belongs to a deleterious food chain हुआ मते which of the following कहबा मधुस्मिता रहि जाओ टिके कहबा which of the following belongs to a deleterious food chain deleterious food chain कौन कहबा हमें को which of the following belongs to a deleterious food chain मैम पीडीएफ रे आपनका क्लास रो हैंड रिटन प्रिंटिंग भी मिक्स करी कि पीडीएफ करिवे प्लीज सेमिति इजीली डाउट क्लियर हेसिबो ए जोटा मु टिक मारुची जहा लेखुची एटा को ही मु एक्सपोर्ट करूची आ एटा ही तमनकु पीडीएफ रे शेयर करूची आ किछ तो एक्स्ट्रा दउनी माने एटा को काटी कि भी दउनी रॉ रे दउनी एक्सपोर्ट करी कि दउची ओके तो मते को 5 नंबर 5 क्वेश्चन कोन कहू छ सी yes ma'am तो कौन अच्छी ना algae small fish large fish no grass cow human not at all so कौन अब dead leaves bacteria earthworm yes earthworm जोठी थी हमें right answer देखि मारिबा okay because हमें जानि छी the dead material जते सब dead decomposed अछंती the detritus food
चेन जदि आम कंसीडर करिया फूड चेन को. सो द detritus food chain starting with the dead organic matter broken down by the decomposers and the detrifers. सो कहि परिबा डिकम्पोजर माने ही तांको कोन ब्रेक डाउन करंती. सो इजीली आमे जोठी अर्थवर्म देखिबा माटी रे अछंती माटी रे ही डिकम्पोज हुए तो आमे इजीली आ सहित रिलेट करि परिबा. यस मैम माटी सहित अर्थवर्म को आमे रिलेट करि पारुचे एंड हमर डिकम्पोज कोठी होची ना माटी रे ही हेकी मिसुची. सो डायरेक्टली अर्थवर्म जोठी अछि ता सहित आपण माने कोन डेट्रियस वर्ड जोठी देखिबो अर्थवर्म अछि ता सहित रिलेट करिवो एंड ताको आंसर मारिवो. क्लियर वेरी गुड. नेक्स्ट देखिबा the pyramid of energy an ecosystem is any ecosystem I think yes the pyramid of energy in any ecosystem is कौन अछि मते को सब बेले मन रखि था इकोसिस्टम रे हमर एनर्जी कौन जाए ना अपराइट जाए. पिरामिड कहिले सपोज आपण मानकर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल अछि तो प्रति स्टेप रे जते बेले ऊपर को जाउची दिस इज द 10% लॉ को फॉलो करूची. एवरी स्टेप रे से केते ना 10% अपराइट होची. सो दिस इज ऑलवेज व्हाट ना अपराइटिंग फॉर्मेट रे जाउची दैट मींस ऊपर को जाउची. ओके सो ऑलवेज अपराइट बिकॉज़ एट ईच कौन कहबा upright because at each trophic level energy is lost as heat due to the respiration and the metabolic activities. okay respiration पाई हैला metabolic activities पाई हैला every topic level हमरा 10% को ना decrease हुए. inverted नहीं upright हबो. pyramid of energy is sorry in any ecosystem is always what ना upright. okay चलो इन्वर्टेड ना इन्वर्टेड नहीं इन्वर्टेड हबनी इम्पॉसिबल इन एनर्जी पिरामिड्स. दिस आमे कोन कहि परिबा देयर इज नो हायर लेवल कैन हैव मोर एनर्जी दैन द लेवल बिलो इट. ओके तो या ऊपर को वाले हायर एनर्जी आमे पाउचे ना ऊपर को वाले लोअर एनर्जी आमे पाइबानी. सो एनर्जी एठी कोन होची ना अपराइट हबो. नेक्स्ट क्वेश्चन चलो व्हिच पिरामिड कैन बी इन्वर्टेड. एबे कुह को पिरामिड इन्वर्टेड सेम क्वेश्चन जोडा की कौन एमती ना राष्ट्र प्रोनाउंस भी करि पानी. मैकेव कौन अछि तम ना मैकेव्री व्हाटएवर मिस्टर एम को एबे को दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. काम उत्कर्ष से क्लाउड कौन अछि आउटिके आस तळु को आउटिके कमेंट आउ जने कमेंट करो ऊपर के आसीबा. काम उत्कर्ष प्रकाशी कौन एक्जाक्टली लिखि आउ थरे लिख को. तो एठी कोन हबो मते कुआ नंबर 7 व्हिच पिरामिड कैन बी इन्वर्टेड. एनर्जी देखो डायरेक्ट कहि दबो मना कर दबो कारण एनर्जी जोठी आसिला आपण माने कोन करिवे ना मैम आमे अपराइट ही चूज करिवो. एनर्जी आसिला दैट मींस अपराइट ही चूज करिवो. देन नंबर आसिले नंबर जोठी आसीबो कैन कोन नंबर तो इमिति न थाय. सो दिस इज कैन बी इन्वर्टेड इन एन इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट आसिला व्हिच वन लार्जर गोटे थाय जेमति कि लार्जर ट्री सपोर्ट जमे नेबा. ट्री सपोर्ट्स मेनी हर्बिवोर्स एंड द कोन ना पैरासाइट्स. सो ट्री केस रे आमे नै जिबा कि नंबर नेबा. बट जनरली आमे जते पिरामिड को कंसीडर करछे आइदर आमे एनर्जी नोचे न हले बायोमास नोचे. बट एठी कोन अछि ना नंबर तो हेई पारुची कारण ट्री केस रे हेई परिबो बायोमास भी हेई परिबो. सो बोथ बी एंड सी जदि ऑप्शन ने अछि देन गो फॉर दैट. so go for that because biomass भी आमे जानि छी that is also can be inverted. मधुस्मिता yes मधुस्मिता टिके रुह फ्लो ब्रेक हे रे बाबा टिके रहि जा कहूची तमन कहूची क्लास टा एंड हे जाओ देन तम मानकर जहां भी क्वेश्चन अछि एंड टिके डिस्कस करले बेटर होबो ना मधुस्मिता वेट. so both V and C will be the right answer. Next देखो the shape of the pyramid of number in a tree ecosystem is tell me upright inverted tree. एबे ही कहिची tree कथा आसिला माने आपण माने कोन चूज करिवे upright only in energy case रे. जदि energy question अछि आपण माने कोन चूज करिवे ना upright. बाकी जोठी भी आसिला आपण माने कोन inverted देखुचंती. सो मते कहंतु what will be the right answer. tell me what will be the right answer. अपराइट कहिसी एनर्जी केस रे ओनली एनर्जी केस रे आपण माने अपराइट चूज करिवे. एटी क्वेश्चन कोन कहिची द शेप ऑफ द पिरामिड नंबर इन ए ट्री इकोसिस्टम. ऑलरेडी मु तम सहित डिस्कस करि सारछि कि ट्री आसिले कोन कहिबो
जदि ओनली एनर्जी कथा पचारिछि ताहाले आपण माने अपराइट कहिबे जदि ट्री आसीछि इजीली ताकू कहिथिली इन्वर्टेड चूज करिवो या प्रीवियस क्वेश्चन त मानको बोधे कहिथिली एनर्जी आसीले अपराइट करिवो नंबर को बुझाइथिली कि नंबरटा इन्वर्टेड आसुछि सेटा ट्री केस रे आसुछि नंबरटा इन्वर्टेड एंड ट्री केसेस रे आसीबो सो एठी कोन पचारिछि डायरेक्टली द ट्री इकोसिस्टम पचारिछि ट्री इकोसिस्टम इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ व्हाट ना इन्वर्टेड दिस इज व्हाट ना इन्वर्टेड क्लियर ओके 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 चलो नेक्स्ट देखिबा वेरी गुड जदि एठी हां सिलिंड्रिकल आसुचे हमें कोन कहि परिबा ना दैट इज नॉट यूज्ड इन द इकोलॉजिकल स्टडीज पिरामिड्स आर क्लासिफाइड हमें कोन कहि परिबा एज द अपराइट और इनवर्टेड जदि सिलिंड्रिकल पचारिला इकोसिस्टम सहित तार किछि रिलेशन ही नाही सिलिंड्रिकल रो हमें इकोसिस्टम सहित कोन ना किछि रिलेशन करिबानी बिकॉज़ इकोलॉजी हमें कोन माने इकोसिस्टम आसिला इकोलॉजी हमको कोन कहउछि ना दिस इज द स्टडी ऑफ व्हाट ना डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स माने गोटे प्रॉपर एनवायरनमेंट भीतर केमिति बंचुसंती आमर इकोटोन होउछि कोन ना जते बेले गोटे एनवायरनमेंट भितरु आउ गोटे एनवायरनमेंट गोटे इको जोन भितरु आउ गोटे जोन को जते बेले ट्रांसफर होउजंती से मीडियम टा को हमें कोन कहउछि ना दिस इज द ट्रांसफर ऑफ द इकोटोन दैट इको जोन गोटे जोन रु आउ गोटे जोन को जाउछि दैट इज द इकोटोन सो इकोसिस्टम कोन कहउछि ना हमर लिविंग ऑर्गेनिजम्स माने जते बेले गोटे इंटरैक्ट करूसंती कोन परस्पर भितर गोटे पर्टिकुलर रीजन भितर आमे ताकू कहउछि ता ऊपर आमे स्टडी करूछि आमे कहउछि वी आर स्टडीिंग अबाउट द कोन ना इकोसिस्टम इज नथिंग बट आमे कहि परिबा जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स माने अछंती गोटे पर्टिकुलर एरिया रे ता ऊपर आमे रिसर्च करले ओके मैम थ्योरी पढ़ांतु तापर एमसीक्यूज करबा थ्योरी पढ़िया पे आपण मानको एप्लीकेशन आसिया को पड़िबो YouTube रे थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड हुएनी आपण माने मते रेफर दियंतु कोठी प्रोवाइड होउची देन मु निहाती फॉलो करबी ओके संतोष चलो सो सिलिंड्रिकल इरेगुलर बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन लेनमान्स 10% लॉ इज एसोसिएटेड विथ कहां सहित 10% लॉ yes yes पेड क्लास रे थ्योरी सहित पेड क्लास जीओपी आपण मानकर जो भी लाइक एडुटेक चैनल आपण जानतु पेड क्लास आसे कोथि पई कि आपण मानकर जोटा एमसीक्यूज हम रिलेट करू छे मु एटा आपण कोटे एमसीक्यूज पढेली ता सहित चारिटा ऑप्शन अछि चारिटा ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट कोन करू छे हम ना मु आपण को रिलेट करिके पढौची क्लियर बट सेठी कोन होची ना आपण माने थ्योरी पढिले थ्योरी रु कोन कोन एमसीक्यूज फॉर्म हेई पारिबो सेटा आपण माने सिखिबे that's the difference between the application class and the free classes you are just taking from us okay chalo so kwa the land means 10% law is associated with what kaha sahita associated what will be the right answer न्यूट्रिएंट साइकिल नाही बिकॉज आमे जानि छे न्यूट्रिएंट साइकिल आसिला माने आमे कोन कहू छे मैटर दैट मींस कोन कार्बन आसी गला नाइट्रोजन आसी गला नाइट्रोजन फिक्सेस नाइट्रोजन साइकिल कार्बन साइकिल मने पडुची सो एटा आसी जो कोन न्यूट्रिएंट साइकिल ले कोन नाइट्रोजन एंड कार्बन कथा जेते आसिला न्यूट्रिएंट साइकिल रिलेट करबो ओके वेरी गुड सो कौन पचारछि ना 10% लॉ दैट मींस एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम कौन ना जते बेले अपराइट हे जाउछि मैम 10% गैप रहउछि प्रति स्टेप रे 10% गैप तार रहउछि सो लैंडमैन्स लॉ स्टेट्स दैट ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज पास्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट मींस द रेस्ट लॉस्ट एज अ हीट 10% सपोज एठी हमर कोन 100% पिरामिड इज दैट सपोज दिस इज द पिरामिड ओके डिफरेंट लेवल को गला हमरा 10% लॉस होची सपोज एठी हमरा 100% रो हम स्टार्ट करी छे देन 10% आसी केते लाठी 90% थिबो देन अगेन आसीले एठी 80% थिबो देन आसीले एठी 70% थिबो दैट मींस हम जते अपराइट वर्जन ने जाउ छे 10% एनर्जी कोन से लॉस हे बाकी दिको ट्रांसफर होची क्लियर इज दैट क्लियर वेरी गुड चलो नेक्स्ट स्पेसीज इवोल्यूशन आपण माने जानिबे लाइक हमर डिफरेंट टाइप रो स्पेसीज जेते बेले गोटे इकोसिस्टम को हमें स्टडी करूचे गोटे इकोटोन को स्टडी करूचे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज सेटा हमें देखिया को मिलिबो सो जो इवोल्यूशन केमिति रहउची स्पेसीज रु स्पेसीज आपण माने जानिथिबे स्टार्टिंग रु हमर जिराफ रो बेक लंबा नथिला तार बेक कोन बहुत ही छोटो थिला नॉर्मल थिला जेंति नॉर्मल एनिमल्स माने करे रुहे बट जेते बेले खाइबा को से पाइलानी धीरे धीरे बेक लंबे की खाइबा को ट्राई करला तापर परे तारा जेते भी ऑफस्प्रिंग माने आसिले से मानकर बेक लंबा हे आसिला सो दिस इज व्हाट दिस इज द इवोल्यूशन सो सेम टाइप रे हमर स्पेसीज मानकर इवोल्यूशन भी हम माने स्टडी करूचे को स्पेसीज रा कोन कोन डिफरेंट तांकर स्टेज आसिले कोन कोन वेरिएशन आसुची कोन कोन इवोल्यूशन आसुची दीज आर अंडर द व्हाट स्पेसीज इवोल्यूशन ओके पॉपुलेशन ग्रोथ हमें कोन कहूचे ना ऑब्वियसली दैट रिफर्स टू व्हाट ना हमर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स
नॉट द इकोलॉजिकल एनर्जी फ्लोड कौन ना हमर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स ऊपर ही आसी जिवो दैट मीन्स गोटे पर्टिकुलर एरिया भितरे पॉपुलेशन केते अछि ओके जेमिति आपण माने जानिथिबे खोर्धा हला खोर्धा को हमें कोन कहउचे ना गोटे पर्टिकुलर रीजन भितरे हाईएस्ट पॉपुलेशन हम कहउचे सिटी कोटा ओडिसा रा ना खोर्धा बिकॉज ऑफ द भुवनेश्वर प्रेजेंट हियर तो नॉर्मल जति की एरिया भितरे ओवर क्राउडेड लोक रहउचंदी सो दिस इज व्हाट ना पॉपुलेशन ग्रोथ सो सेमिति हमें गोटे इकोसिस्टम जोन भितरे स्टडी करबा कि एई एरिया भितरे जति की नंबर ऑफ स्पीशीज अछंदी पॉपुलेशन दैट डजंट मीन कि अबाउट द ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन इज अबाउट द नंबरिंग ऑफ द स्पीशीज तो नंबर ऑफ स्पीशीज केते अछंदी गोटे पर्टिकुलर रीजन रे पर्टिकुलर एरिया रे ताको हमें स्टडी करूचे दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ ओके नेक्स्ट देखो इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम टेल मी what now in a pond ecosystem the pyramid of biomass is usually Nandita thank you Nandita चलो most welcome अच्छा जिराफ कथा जान नथिलो सापर आगुरु गोडो थिला जानिथिलो आपण माने देखिथिबे कोन नेउल जो टाइप रो तो सापर आगुरु ठीक सेही टाइप रो गोडो थाए तार भी सापर भी 4टा 6टा 8टा गोड़ भी थिला तो धीरे धीरे से तार गोड़ रे यूज ही गलानी तो धीरे धीरे सेटा कमी गला लाइक हमर कोन देह सहित मिसी गला तार सेटा बहुत टाइम गैप लागिला सेटा सब तुमको जूलॉजी क्लास रे डिटेल रे पढाबो हैला मैम तुमको बुझेबे दिस दैट इज नॉट माय टॉपिक so in a pond ecosystem the pyramid of biomass is usually what upright inverted cylindrical or non एटा भी मु ऑलरेडी त मानु कहि देइची कहि सारी छी अच्छा ना ना ट्री इकोसिस्टम कहिथिली एंड एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट कहिथिली सो अपराइट कहि छी माने हम कोन कहि परिबा ना ग्रासलैंड इकोसिस्टम जदि आपण मानु को उप्स सॉरी यस जदि ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपण मानु को क्वेश्चन आसिला देन डायरेक्टली कनेक्ट करिबा दैट इज द अपराइट वन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट ए सब को जदी रिलेट करिबा ताहाले हम ताकू कोन ना डायरेक्ट अपराइट करिबा एंड एनर्जी लेवल इज ऑलवेज अपराइट क्लियर बट इट इन्वर्टेड कहि छी मु ट्री को आपण मानक सहित रिलेट करिथिली जे हमरा फाइटोप्लैंक्टन सा पाई आपन को बटनी रिलेट करिया को पड़िबो ताको भी मैम पढेबे बट स्टिल कहि दो जे फाइटोप्लैंक्टन आर द काइंड ऑफ कोन हमरा बायोमास भीतर एंट्री करिवे तो स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स आर द बायोमास सपोर्ट्स एंड आमे कहि परिबा लार्जर बायोमास जोडा कि हमरा कोन पोखरी भीतर देखिथिबो पूरा सिउली हेकी चारियाडे पूरा ऊपर भासंती ग्रीन ग्रीन हेकी तो सपोज गोटे पोखरी रो गोटे साइड रे सब लोक माने यूज करंती पानी पानी गाधा गाधी करंती से गाई फाई भी जाई गाधाती जा भी होय पोखरी रे बाकी गोटे साइड पूरा अनयूज्ड रही जाय जो साइडटा अनयूज्ड रही जाय ता भीतर कोन होई ना ग्रीन ग्रीन कलर रे पूरा आल्जी फंजी सब एमती माने फंजी नहीं बट आल्जी सब algal गुडा भासंती तो दैट इज व्हाट ना टाइप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स तो आमे कहि परिबा द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स बायोमास सपोर्ट्स व्हाट ना ए लार्जर बायोमास ऑफ fish because the phytoplanktons produce very fast जदि once से माने स्प्रेड करले ताले ऑल ओवर जति की पोर्शन अनयूज्ड रही थिबो से सबुतिक कोन ना फाइटोप्लैंक्टन्स माने लाइक यूजुअली सडनली कोन ग्रोथ करिजो ऑल ओवर द पॉन्ड रे तो हमें याकू कोन ना इन्वर्टेड रे नेबा क्लियर बुझी परिलो काहे कि हमें नौचे एथिरे ना इन्वर्टेड नौचे क्लियर चलो नेक्स्ट the first trophic level in an ecosystem is occupied next again mate kuha kon habo na the first trophic level in an ecosystem is occupied by हम अधस्मिता आम पोखरी रे भी हुए चला yes so mate kuha the first trophic level in an ecosystem is occupied by herbivores first trophic level कहि देला herbivore रे हम कोन कहू ना these are the primary consumers feeding on what na producer feeding on what producer so they belong to the secondary one को हम जिबा ताको herbivore को कोन secondary को हम नै जिबा then carnivores को हमें कोठी कंसीडर करिबा carnivores कोन ना दे तो हायर लेवल आसी गले हायर लेवल कंज्यूमर्स रे से माने कोन फीडिंग ओवर द herbivores एंड अदर carnivores ओके से माने फर्स्ट लेवल को जिबानी आंको हमें का सहित ना हायर लेवल सहित चूज करिबा देन आसिले की ना प्रोड्यूसर्स दैट मींस थैंक यू चलो प्रोड्यूसर्स आसिला आमे तांको कोन कहिबा ना दीज आर द प्लांट्स हेले algae हेले एंड द सम ऑफ द बैक्टीरिया को हमें कंसीडर करूचे बिकॉज़ दे ऑक्युपाइज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल as they
convert solar energy into food via what na photosynthesis. So jete sabu plants asile in the form of obviously ame algae को भी नहीं परिबा and some bacteria को भी नहीं परिबे जो माने photosynthesis रे take part करूचंदी तो आको ame नेबा कोन as the producers ये plants हेले algae हेले and some bacteria. Is that clear? चलो next चलो. Which law of thermodynamics explains the energy loss at each trophic level? कोटा को मते कही थिली ऑलरेडी लाइक कोन साइंटिस्ट कर ना तो जानी थिला बट मते को लॉ अकॉर्डिंग से जीव थर्मोडायनामिक्स सहित हमें से लॉ को कंसीडर करूचे जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ और थर्ड लॉ. हाउ श्रीमान मो पाखे हाथ अच्छी हाथ रे माड़ भी बसे जानचो तो वाओ बेंग गप कहले चलो yes a नहीं zeroth law will be not no zero law नहीं zeroth law relates to the equilibrium between the systems जदि आसी गला ताहाले हमें ताकू कोन कहबा ना zeroth law. Equilibrium between the systems. Okay, so first law सहित हमें कहा को रिलेट करिबा law of conservation of energy माने पडुची law of conservation of energy जदि आसिला हमें कहबा first law. तो रिलेट करि परिबा कि सेकंड लॉ सहित हां आउ तो किछि ऑप्शन नाही मैम तो जीरो लॉ फर्स्ट लॉ तो एलिमिनेट करि देले दीटा ऑप्शन ही रहिला थाले हमें तांको एलिमिनेट करि देबु गोटा को किछि पिला हमर डी कहबे किछि पिला सी कहबे डी कोन अछि थर्ड लॉ ना थर्ड लॉ सहित हमें रिलेट करिवानी मैम हमें जानि छे थर्ड लॉ सहित कोन ना एंट्रोपी सहित हमें रिलेट करछे थर्ड लॉ को राइट एंट्रोपी सहित तो रहिला कि ना सेकंड लॉ ऑब्वियसली एक्सप्लेन्स द एनर्जी ट्रांसफर इज नेवर 10% efficient. Okay, so some energy हमें कहि परिबा is always lost as a heat transfer. So इते बेले ऊपर को हमें जाए तो heat transfer रे भी किछि lost हमर हे जाए. ओके हाँ भूली गलनी तमे जोडा मन रखिथिबो सेही अकॉर्डिंग तो एग्जाम रे पडिबो ना काई भाबुछ. चलो नेक्स्ट को मते the amount of साइड हे जाय क्वेश्चन पढ़ा आंसर दियो मते को द अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड इन एन इकोसिस्टम थ्रू फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड बट अमाउंट एनर्जी फिक्स्ड हे थाए कोथरे नामर इकोसिस्टम. ओके न्यूटन थर्ड लॉ को एठी काई आनी कि तमाने जबरदस्ती पुश करूछ मु जानि भी पारुनी यार आंसर दियो. द अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड इन एन इकोसिस्टम थ्रू photosynthesis is called what? Is called obviously primary productivity. चलो right answer कौन हबा कुआबे that is primary productivity हबा कौन पाई because we know the total energy captured by the producers measured as the gross primary productivity कौन ताकू GPP कहंती कौन that is the gross primary productivity. Is that clear? Very good. चलो second law already जानी छो energy stored by the consumers from the food of the कौन food they eat. Okay सेथिरे हमर कौन consume है कि sorry store है कि रुहे. नेक्स्ट चलो नेक्स्ट यस जदि नेट प्रोडक्टिविटी क्वेश्चन आसला ताहाले आपण माने कोन कहि परिबे जदि नेट प्रोडक्टिविटी क्वेश्चन आसला आपण कोन कहि परिबे एनपीपी कहिली सॉरी एनपीपी आपण माने कोदे कहिनी ना एनपीपी कहिनी बट एनपीपी बाहर करिवे मान दैट मींस द नेट प्रोडक्टिविटी आपण जते बाहर करिवे केमिति बाहर करिवे इज इक्वल टू जीपीपी माइनस द आर. क्लियर ताको हमें दिस इज द फार्मूला हमें जोथरे नेट प्रोडक्टिविटी काढुचे. चलो नेक्स्ट व्हिच ग्रुप एक्ट्स एज द
clean up crew of ecosystem. Tell me what will be the right answer. Very good Om Prakash. चलो तमें तो एमती कहले मु खाली हसी हसी क्लास करी आ तुम जो हरकत सब अनदेखा करदेवी आ मैम एटा साइंस रो क्लास की एटा पूरा साइंस रो क्लास डेली आपण मानकर 5टा टाइम टा फिक्स्ड हो जाइए जनरल साइंस दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी ता सहित एनवायरमेंटल साइंस एंड दिस इज द इकोलॉजी एंड ईवीएस टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन आज फर्स्ट क्लास भावुँ आपण मान गला बट मिक्स करके आनी नेक्स्ट क्लास पर्यंत ओके चलो मधुस्मिता तमे केते टाइम क्लास रे 45 मिनिट्स पर तुम पचार एटा साइंस क्लास ना एटा को क्लास हो हो माँ मु बुझिली तुम मनर व्यथा मु बुझी पारली producers, herbivores, decomposers or the carnivores? What will be the right answer? So which group act as the clean up crew of ecosystem? कहा को हमें कहूचे कहा को कहूचे obviously जे decompose करूची that means bacteria. Okay कहा को हमें कहूचे obviously bacteria हेले कहि परिबा ना नहीं बैक्टीरिया हेले फंजी हेले एंड अदर सम इंसेक्ट जो माने भी हमर कोन डिकंपोज करिबार हेल्प करछन से समस्त हमें कहि परिबा दिस इज द क्लीन अप क्रू ऑफ द इकोसिस्टम क्लियर चलो नेक्स्ट एनर्जी टेल मी नेक्स्ट कोन अछि ना एनर्जी दैट रीचेस द हर्बिवोर्स लेवल इज रफली what % of the total sunlight captured by the producer जेते बेले आपण माने इकोलॉजी की ईवीएस रो किछि क्वेश्चन पचला एंड एनर्जी परसेंटेज रे आपण माने पचला ना डायरेक्टली आखि बंद करी कोन ना 10% सहित रिलेट करिवे 10% सहित करिवे बिकॉज़ आपण माने स्टार्टिंग रु कहिछि कोन लिंडमैन 10% लॉ जोदरे कोन अबाउट 10% ऑफ एनर्जी मूव्स अवे फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द हर्बिवोर्स डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को हम जेते ऊपर को जाउचे 10% हमर कोन लॉस ही जाउछि बुझैछि क्लियर there is no need of any explanation of the other options there are also irrelevant one chalo succession starting on bare rock is called succession starting हुए कोठी ना हमारा bare rock रू start हुए okay so that related to what Hydrarch Hydrarch Mesarch or Lithos कौन हबो राइट आंसर मते को जेराज कहिला दैट मीन्स देखंतु जेरो रु आपण माने रिलेट कर देबे कोन डेजर्ट एरिया सहित ओके जेरो रु आपण माने डेजर्ट एरिया सहित रिलेट करिवो दैट मीन्स कोन आपण कहि परिबे दैट ब्रॉडली टू द सक्सेशन ऑफ द ड्राई हैबिटेट्स व्हाट रिलेटेड विथ द ड्राई हैबिटेट्स क्लियर हाइड्राच कहिला दैट मीन्स ऑब्वियसली आपण माने कोन एक्वाटिक हाइड्रोलॉजी जेरोलॉजी आसिले डेजर्ट सहित रिलेट करिवे हाइड्रोलॉजी आसिले हाइड्रा वर्ड आसिला माने आपण वाटर सहित दैट मीन्स एक्वाटिक सहित रिलेट करिवे एठी कोन होईची ना स्टार्टिंग बेयर रॉक कथा कहले आपण माने कोन करिवे मेसर्च कहले कोन करिवे ऑब्वियसली मॉडरेट लेवल ले मॉडरेट ऑफ द एनवायरनमेंट मेसर्च एम फॉर मेसर्च एफ सहित कोन मध्यम मॉडरेट ता सहित रिलेट करिवे लिथोस्फियर माने पडुची आपण को हिस्ट्री को रिलेट कर दियन टिके कोन हमर कोन yes लेथो सहित रिलेट करंतु लेथोजोन को लिथोस्फियर सहित आपण माने रिलेट करंतु that is lithosphere that is related what now with the asanti class का आसंतु ओके सो लिथोस्फियर ता सहित हमें कोन ना स्टोन को रिलेट करि परिबा रॉक हेला स्टोन एज हेला हमें माने पकोच हिस्ट्री सहित रिलेट करूचो स्टोन एरा को हमें कोन ना लिथोस्फियर कहउथिले सो या सहित आपण माने रिलेट करि पारुचंती तो यस सो लिथो सहित स्टोन एंड एठी कोन अछि रॉक ही अछि सो रॉक विथ द लिथोस्फियर ओके वेरी गुड स्पेसिफिक टर्म जोटा कि आपण माने कोन जानि संती सक्सेशन बिगिन होची कोन ऑन द वेयर सरफेस यदि क्वेश्चन आपण आसिला बिगिनिंग ऑफ द सक्सेशन इन एनी इकोलॉजी और एनी इकोलॉजी पार्ट हमें कहि परिया कोठु स्टार्ट होची ना मैम ये हमरा लिथोस्फियर रो स्टार्ट होची ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पायोनियर कौन क्वेश्चन आसिला हाँ जे कहली ना कहा सहित कौन रिलेट करछो दैट्स अप टू यू हमर इंपोर्टेंट थिंग हैला हम किछि क्वेश्चंस को मन रखिबा कहा सहित रिलेट करछो जदी रिलेट करके हम 5टा जगह रे 25टा मन रखिबा अछि दैट्स अ वेरी गुड थिंग ना ओके चलो so the pioneer species in primary succession on rocks are usually what pioneer succeed
कौन अच्छी पायोनियर स्पेसीज इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन द रॉक्स कथा पचारिला प्राइमरी सक्सेशन पचारिला एंड से स्पेसीज भी इंक्लूड करिछि ताहले हमें काहा गुनेबा लास्ट ट्रीज देखो रॉक ऊपर त हमर लास्ट ट्री बिल्कुल ग्रो हे परिबनी ताको एलिमिनेट करि ही दियो ग्रास भी छाड़ ताको एलिमिनेट कर दियो मॉसेस एंड लाइकेन्स ता भीतर टिके त माने कंफ्यूज हबो ओके बट लाइकेन्स हमर आगो आसे लाइकेन्स आसिला पर हमर मॉसेस आसे ओके yes yes so lichens आगो आसे हमें कहि परिबा कि the first to colonize the first to colonize bare rocks over what over the lichens ता परे हमर कोन आसे ना formation by the lichens and the mosses जोटा कि हमर कोन mosses परे grasses आसे तो बेसिकली हमें जति स्टार्टिंग करबा कोठु ना ताहाले हमें लाइकेन्स रु स्टार्ट करिबा लाइकेन्स वन्स हमर कोन पत्थर ऊपर इमेज तुमको देखैले तमे टिक नेक्स्ट क्लास रे रिलेट करि परिबो सपोज हमर कोन स्टोन आसिला त स्टोन ऊपर गोटे लेयर कोन लाइकेन्स आसी गला तो लाइकेन्स ऊपर पुनी अगेन कोन ना हमर मॉसेस आसी गला तो मॉसेस हैला पर हमर पुनी सेठी ग्रास हेबा स्टार्ट हबो किंतु खाली पत्थर रे त हमर स्टार्ट हबनी ना पत्थर रे गोटे गोटे थाए जेमिति गच्छ गोटे मंजी पोतिलो फास्ट कोन तार गोटे बीजा माने एमति जो कोंदी कोन गच्छ रु टिके आगे गोटे कोन गजा है कि गोटे बाहर ना रूट बाहर जोटा हमर ऊपर को सूट सिस्टम स्टार्ट होई जोठो हमर मंजी रो आगो फास्ट गजा है कि बाहर ता परे गोटे पत्र आसे ता परे तो ऑल ऑफ सडन तार ब्रांच आसी जायनी तार ट्रंक बाहर जायनी तार स्टेम सिस्टम आसी जायनी टोटल सूट सिस्टम हे पे टाइम लागे तो जो इनिशियल पेज हमें कहूचे तो स्टार्टिंग कोन पत्थर ऊपर आगो हबो लाइकेन्स ता परे हबो मॉसेस ता परे आसीबो ग्रासेस जते बेले सक्सेशन पीरियड आपन को पचार जी दैट मींस सब बेले कोन प्राइमरी सक्सेशन कहै छी ता माने फास्ट पीरियड ता को आपन माने जिबे चलो मु जूलॉजी नहीं मु बॉटनी पढ़ाए चलो द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी रीच्ड इन सक्सेशन इज कॉल्ड देखो फाइनल पचारिला फाइनल मींस गोटे लेयर गोटे इकोसिस्टम गोटे इकोटोन जते बडे फाइनल लेवल को जाए यस इज एग्जैक्टली जर्मिनेशन दीपक थैंक यू फॉर लाइक रिमाइंड मी चलो नेक्स्ट चलो गप्प टिके कम करो पढ़ा टिके अधिक करो हैला चलो द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी रीच्ड The final stable community reached in the succession is called final कहिला final yes मु सब बेले रिलेट करे कोन मूवी रो क्लाइमैक्स चाहि वेट करो सब बेले तुमको घरे कोंदी ना मैम मूवी रो सॉरी की भी घरे तुम ना धरि कि मूवी रो क्लाइमैक्स सीन जाय वेट करो दैट मीन एंड सीन जाय ताकू करो दैट मींस द क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज द कोन ना reached in the succession is called कोन final succession is always the climax क्लियर ताकू मने रखिया पे इजी तो सबुटु शॉर्टेस्ट क्लाइमैक्स मूवी रो क्लाइमैक्स सहित हमें कोन एंड पार्ट को रिलेट करू छे तो सक्सेशन सहित भी क्लाइमैक्स में एंड पार्ट को ही रिलेट करिबा क्लियर वेरी गुड जदि आपन को कोन अछि सेरल स्टेज यस जदि सेरल स्टेज पचारले आपन माने कोन कहिबे ना रेफर्स टू द इंटरमीडिएट जोटा हमर मूवी रे थाए ना इंटरमिशन सो दिस इज द इंटरमीडिएट वन ओके इंटरमीडिएट स्टेज को हमें कोन कहू छे ना सेरल This is the intermediate part. Then again, जो pioneer कही देला, ताकू मूवी रे कहाँ से रिलेट करिया टिके को? The first intro part. So pioneer सहित हमें रिलेट करिया. This is the intro part. तो याकू ऐसा. This is the intro part. This is the interval part and climax is here. Total movie 18 देखी थी और 3टा क्वेश्चन में. 3टा ऑप्शन में अपन मन का मूवी क्लियर था. Very good. So चलो next चलो secondary communication secondary community is always तुम जानते this is a standard term. This is the irrelevant one. ऐसा तरह की relation ही नहीं. Ebe not now next class please excuse me for now चलो next secondary succession occurs so secondary succession already कहि छी तो प्राइमरी रे आपण माने कहा को रिलेट करिवे जेंति कि प्लेन रॉक द बेयर रॉक को आपण माने प्राइमरी सक्सेशन ने नेले सेमिति सेकेंडरी सक्सेशन सहित हमें कहा को लाइक रिलेट करिबा मते को न्यूली फॉर्म्ड वोल्केनिक देखो न्यूली फॉर्म्ड कहि छी दैट मींस ये तो प्राइमरी रे पळेबो ना न्यूली फॉर्म्ड कहि छी दैट मींस ये वर्ड ना प्राइमरी रे पळेबो देन बेयर रॉक सरफेस दिस इज आल्सो प्राइमरी रे पळेला देन abandoned farmland and दीटा ऑप्शन तब मन पई छाडी देछि दीटा ऑप्शन छाडी देछि मते को abandoned farmland हैला दैट इज व्हाट ना सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट अछि जदि abandon हेले भी सेठी सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट अछि रॉक सरफेस नाही जदि सॉइल अछि हमें कहि परिबे कि इठी वेजिटेशन हेई परिबो यस दैट ओनली वेजिटेशन वाज डिस्टर्ब्ड where na abandoned farmland रे हेई परिबो यस नो क्वेश्चन बैक नो एटा ही हबो
ओके चलो yes yes glacier retreat this is very after period ame koi pariba this is the bare land exposed after the melting of the glaciers okay undergoes the primary succession eta primary re bi ye bi again ye amar primary ye primary this was is only the secondary again ye amar primary re pale asibo glacier retreat चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम मान हाइड्राच सक्सेशन बिगिन्स इन मते कह हाइड्राच सक्सेशन कोठी बिगिन हुए डेजर्ट रे रॉक रे फॉन्ड रे या फिर फॉरेस्ट रे व्हाट विल बी द राइट आंसर ना ना पीडीएफ मिलबनी तुम माने क्लास को तो लाइक करूनो चैनल रे पर्यंत सब्सक्रिप्शन कोन बढ़ीनी मु सुनिली तुम माने कोन किछि करूनो खाली क्लास रे बदमाशी करूछ ताहाले केमती पीडीएफ देबी को desert rock pond or forest what will be the right answer what will be the right answer desert obviously habani because of this is very dry obviously rock to habani this is ame kon lithosphere succession ko ame nei jauche primary succession re पळौची ओके नेक्स्ट कोन अछि हाइड्रा सब बेले कहै कोन हाइड्रा सहित ame रिलेट करबा कोन ना aqua सहित aquatic सहित रिलेट करि परिबा कोन हाइड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट ना वाटर aquatic condition is the hydrology so हाइड्रा को ame रिलेट करि परिबा कि पॉन्ड सहित रिलेट करि परिबा पोखरी सहित वेरी गुड चलो नेक्स्ट देखो yes forest सहित climax forest को always do relate with the कोन climax stage सहित okay not the starting point of the hydroxon oh sorry succession clear कोन किछि डाउट रहिला दीपक so आज क्लास एति एंड करिबा what say आज क्लास एति एंड करिबा मैम फाउंडेशन बैच अलग आसीबो ना प्रभात 1.0 प्रभात 1.0 ही आसीबो बिकॉज़ आपनकर आरआई पीओ एंड एसआई एसआई आई थिंक नाही बोथे यस यस पीओ आरआई आरआई अमीन एति गिरे ही अछि एटा ओके सो यार फाउंडेशन कोर्स आपन मानकु सब एथरे मिल अगेन आपन मानकु आउथरे स्लाइड देखे दोजी जो मानकर भी किछु डाउट रही छि देन yeah here you can go so एटा हमर रहउची कोन ना बोथ पीओ आरआई एआरआई अमीन नो टोटल फाउंडेशन बैच ही एटा स्टार्ट होची या पे और किछि एक्स्ट्रा बैच आसीबनी एतरे ही आपण मानकु जॉइन हेबा को पड़िबो ओके ना ना फाउंडेशन बैच कोथि पाई बेसिक रो आपण माने जॉइन होउचंदी जदी कोथि महापैक जदी नउचंदी जदी आपण माने महापैक बैच नउचंदी ताहाले सेतिरे आपण माने सब फाउंडेशन बैच स्टार्टिंग रो पढिबे तंटी पिड़ा आइलान रे मोर केते पढिबा 10टा रे पुनी क्लास अछि ना आज राति रे पुनी औरी क्लास अछि ओडिसा जिके तापे टिके रेस्ट दियो मो तंटी को मैम सिविल सर्विस रा क्रैश कोर्स आसीबो डेफिनेटली आसीबो बट टिके टाइम दियो ओके बहुत जल्दी ओसीएस बैच भी आपण मानकर आसुची बट टिके टाइम दियो हैला थैंक यू सो मच गाइस एनीथिंग एल्स मधुस्मिता मधुस्मिता किसी क्वेश्चन थिला मधुस्मिता ना कौन थिला मधु कौन गोटे ना थिला तुमरा टिके आगु आसी जाओ कौन क्वेश्चन थिला को मते टिके मैम आपण साइंस एंड टेक क्लास नेबा मिस करूना दी एक्सट्रीमली मिस करूची बहुत मिस करूची बट ए वन डे एग्जामिनेशन में साइंस एंड टेक रो कहा को टॉपिक से रिलेट करके पढ़ाई बारी भी जानि पानी कि पिला माने टिकी खुशी हेबे सेति पई ओसीएस बैच बहुत जल्दी आसुची जोथरे कि साइंस एंड टेक मु कवर ऑफ करी कैन यू प्लीज रिड्यूस द उत्कर्ष फी लिटिल दीपक like sorry to say but there is nothing in my hand okay the management decision PEO vacancy upcoming आसीबार अछि बहुत बड़ा vacancy आसीबार बोली possibilities अछि तो आपण माने जॉइन हे संतु लाइक फाउंडेशन आपण माने वन स्टडी स्टार्ट करले आपण को माइंड तो कि लाइक सेडा कोन एलिमिनेट हे सिबने ना रहिबो आराम से मैम गोटे डाउट हाँ अमित तमर अपनी डाउट नहीं हाय एमती एमती हैला को कोन डाउट अछि
प्रभात रंजन आपण बैकअप मैम कुआडे गले बैकअप मैम मीन्स प्रभात व्हाट आर यू सेइंग येस ये सब बेसिक रू आपण मानकु थ्योरी सहित पढ़ा हम ओनली थ्योरी एंड वन लाइनर सेठी आपण एमसीक्यूज पाइबेनी ओनली थ्योरी एंड वन लाइनर जेते ता रिलेटेड जेते एमसीक्यूज आपण मानकर यूट्यूब पे क्लास ओके नेहा लिसन तमे जदि नौच फाउंडेशन बैच लाइक प्रभात 1.0 नौच सेटार आपनकर फाउंडेशन कंप्लीट हबा फॉर द पीईओ आरआई एआरआई बट जदि महापैक नौच अपकमिंग जदि एसोर वैकेंसी आसुची सीजीएल भी या सहित इंक्लूड हम विथ आरआई भी इंक्लूड हम सपोज ये रहा 1000 रुपीज सी रहा 1200 रुपीज एमती आप 2200 हो गला ये रही के 3900 सॉरी 3500 सपोज देन पुणी सीजीएल सॉरी एसोर वैकेंसी आसला अपकमिंग जदि एसआई रो बैच लॉन्च होची तार भी फंडामेंटल तो सब फंडामेंटल आपण तो गोटे 1 ईयर जाए जहाँ भी वैकेंसी आसो तो आपण को तो गोटे बैच रे ही मिल जिवो ना if not please share a coupon code so I can get a discount yes गोटे coupon code एबे मिल जिवो डिस्क्रिप्शन रे अदरवाइज दीपक तमे टेलीग्राम रे जदि अच्छा कूपन कोड सेटा अवेलेबल होबा बट फास्ट 50 जन पिलांग ही से कूपन कोड सेटा मिल पारि आफ्टर जदि 51 तमे हेथिवो देन कहबनी कि मैम मु कोड यूज करि पारलिनी या फिर मते डिस्काउंट मिललानी फास्ट 50 जन को ही डिस्काउंट मिल अच्छा हाँ आफ्टर क्लास नहीं है ओके देन आस कर क्लास चलो टेक केयर अगेन देखा हम राति 10 विथ ओडिशा जी ओके थैंक यू हैव ए गुड डे टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बट फर्स्ट ऑफ ऑल as I'm saying you all the days that is take care of yourself but first of all do prioritize your parents should be your first priority no one else in the world okay thank you bye bye take care